Okay, students, let us find the solution of our first sub part of question number 2 taken from exercise number 5.1, that is our fifth chapter of mathematics 2, that is application of definite integral. Here we have to find the area enclosed by the given curve, that is parabola, whose equation is y square is equal to 16x and the lattice rectum. Okay, we have to find the area enclosed or area formed by curve, that is y square is equal to 16x, and we know that y square is equal to 4ax is the equation of the parabola, which is symmetric with the positive x-axis. Okay, and its lattice rectum. What is lattice rectum? Lattice rectum is the line segment which is parallel to y-axis, means perpendicular on x-axis and passing through the focus of the parabola. Okay, so let us find the area enclosed by given curve, that is parabola, and its lattice rectum. First of all, we have to draw the graph. We have to draw the diagram of parabola and its lattice rectum. Students, this one is the x-axis and y-axis, x-axis and y-axis, and the point of intersection of these two axes. Point of intersection of axis means x-axis and y-axis is known as the origin. And since y square is equal to 16x, if we compare y square is equal to 16x with the y square is equal to 4ax, that is our standard form of our parabola, which is symmetric with x-axis. Then we get 4a is equal to 16 and a is equal to 4. A is equal to 4. So the focus of this parabola is lie on SA0. A means 4, that is 4 and 0. And the vertex of this parabola is at origin. Vertex of this parabola is origin, and focus, that is S, denoted by S, whose coordinates are 4 and 0. We know that the focus is given by A0. S, A and 0. A and 0. Since focus lie on the x-axis, so its y coordinate 0. Okay, and the lattice rectum is always passing through the focus and making perpendicular to x-axis, that is L and L dash. L and L dash are the end points of the lattice rectum, and we know that the coordinates of L and L dash are a and 2a, and L dash are a and minus 2a. Okay, L and L dash are the end points of lattice rectum of the parabola. Okay, which is perpendicular on x-axis, means passing through the focus, that is making 90 degree at focus. Focus means S, that is A and 0. Here we get A is equal to 4, so 4 and 0. Let us find the L. L means A and 0. A is 4 and 2A, that is 8. 4 and 8. L dash A 4, A is equal to 4 and minus 8. Okay, so since we have to find the area between the parabola, that is y square is equal to, the equation of this parabola is y square is equal to 16x. Clear? Symmetric with x-axis means if we revolve the parabola, we get it is rotating along x-axis. Okay, and y square is equal to 16x is the equation of the parabola which is given.
So let us find the area. First of all, we have to find the area from x is equal to 0 to x is equal to 4. x is equal to 0 to x is equal to 4. यहाँ से लेकर के यहाँ तक. And the curve, the equation of curve in the form of x, since the range of x, we are moving along positive x-axis, means we take the limit of x, that is lower limit is 0 and upper limit is 4. So we have to find the equation of curve in x, that is y in the form of x. Okay. Equation of parabola is y square is equal to 16x. Since we have to find y, so y is equal to under root of 16x, that is 4 under root of x. Y is equal to 4 under root of x. So let us find the area, that is A1. Okay, area A1 is made by the curve, enclosed by the curve, that is y square is equal to 16x, and from ranging from x is equal to 0 to x is equal to 4. So let us find A1. A1 is equal to x is equal to 0 to 4. X is equal to 0 to 4. Since we are moving along the positive x-axis and taking the limit of x, so we have to write dx here, and the function should be y in the form of x. फंक्शन कैसा होना चाहिए? y in the form of x होना चाहिए. So we have to write y. Okay, and this one is equal to x is equal to 0 to 4. Y is equal to 4 under root of x dx, and this one is equal to 4 integral from 0 to 4 of x to the power 1 by 2 dx, and this one is equal to 4 integral of x to the power 1 by 2, that is x to the power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, and lower limit is 0, upper limit is 4. This one is equal to 4 x to the power 3 by 2, x to the power 1 by 2 plus 1, that is x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 is equal 4, lower limit is 0 to 4. This one is equal to 4, that is 4 to the 8 upon 3. Since 1 upon 3 by 2, that is 2 upon 3, and 2 upon 3 is multiplied by 4, that is 8 by 3. Put the upper limit, that is 4 to the power 3 by 2 minus, substitute the lower limit at the place of x, that is 0 to the power 3 by 2. This one is 8 by 3, 4 can be written as 2 square, that is 2 square to the power 3 by 2 minus 0. This one is 8 by 3, 2 and 2 get cancelled. We have 2 to the power 3, that is 2 to the 4 to the 8, 8 is a, that is यहाँ पे 8 हो गया, that is 8 is a 64 upon 3. ये रहा आपका स्क्वायर यूनिट्स, ये है आपका. अभी आंसर नहीं आया. दिस वन इज A1. Okay, so A1 is 64 upon 3. A1 is equal to 64 upon 3. So this one is A1. Since A1 is the area made by the curve from x equal to 0 to x is equal to 4, and similarly we get A2, and A2 is calculated from x equal to 0 to x is equal to 4 and this curve. So similarly we can find A2 is equal to 64 upon 3 square units. So total area A is equal to A1 plus A2, that is 64 upon 3 plus 64 upon 3 square units, that is 2 4 is 8, 2 6 is 12, 128 upon 3 square units. So
सो ये रहा आपका आंसर। हमको इसको डबल करना है जितना, क्यों? क्योंकि ये आपका जो पैराबोला है और पैराबोला इज सिमेट्रिक। कितना सिमेट्रिक मीन्स जितना ऊपर उतना नीचे। तो एल एस इज इक्वल टू एस एल डैश एंड द एरिया ऑफ दिस रीजन दैट इज एल ओ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन एल डैश ओ एस। तो आप A1 इज इक्वल टू A2 होगा, दैट इज 64/3। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2, आपको दोनों को ऐड कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा 128, दैट इज 2 4 8 6 6 12। 128/3 इज द टोटल एरिया covered by y square is equal to 16x and its lattice rectum. So students, please make a note. Any doubt? Please make a note. Okay. Our next question is we have to find the area covered by y is equal to 2x. Y is equal to 2x and x is equal to 0 to x is equal to 5. Okay. You can use our direct formula, that is when y is given in the form of x, that is y is equal to 2x, and we know that y is equal to 2x is the equation of a line passing through the origin. Since y origin, since this equation have no any constant term, that is y is equal to y is equal to mx, that is c is 0, it means intercept is 0. So we can say that this line is passing through the origin, and since we have to find the area enclosed by y is equal to 2x and x is equal to 0 to x is equal to 5, so we use our indication of formula, that is indication of area, that is a is equal to x is equal to 0. The limit of x are given, that is x is equal to 0 to x is equal to 5, x is equal to 5, and since the range of x are given, so we have to write dx and here y. Okay, dx, then here we have to write y, and this one is equal to x is equal to 0 to x is equal to 5, y, the y is equal to 2x, the value of y is 2x dx. This one is equal to twice of integral of x to the power n, that is x square upon 2, and the lower limit is 0 and upper limit is 5. Okay, clear now? Integral of x, that is x square upon 2, lower limit is 0, upper limit is 5. This one is equal to 2 and 2 get cancelled. We have after substituting the upper limit, that is 5, we get 5 square minus the lower limit, that is 0, to the whole square. This one is equal to 25 minus 0, that is 25. So area enclosed, area covered by the line, that is y is equal to 2x and x is equal to 0 to x is equal to 5. Okay, you can draw the graph of this curve such like as y is equal to 2x is the equation of a line passing through the origin, and since we have this one is x-axis, this one is y-axis. Here the range of x, the limits, lower limit is 0, upper limit is 5. Let this one 1 2 3 4 and 5. This is the line whose equation is y is equal to 2x, that is slope is m. Okay, m is equal to 2 and passing through the origin. So if we draw the perpendicular at the point 5, since upper limit is 5, x equal to 0 to x is equal to 5, so draw a perpendicular intersecting the given line at point P. Okay, now we get a right angle triangle, that is OP. सपोज दिस इज एम, ओ पी एम, ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जिसका हमें एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे? आप भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और द पैराबोला x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 एंड द एरिया एंड द इक्वेशन ऑफ
line, equation of the curve in the form of x, that is y should be in the form of x. So y dx, y is equal to 2x. आपने 2x यहाँ पे लिखा तो 2x means x square upon 2, 2 and 2 get cancelled, we get 0 to 5, that is 25 upon 25, 2 and 2 get cancelled 25. ओके आप इसे अपना आंसर चेक कर सकते हो यूजिंग योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखो कैसे, ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया. ओके आप हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. कैसे, देखो P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, और अगर यहाँ y इज इक्वल टू 2x में इफ वी पुट x इज इक्वल टू 5, दैट इज 2 इंटू x इज 5, वी गेट y इज इक्वल टू 10. यहाँ पे क्या मिल गया, 10 मिल गया. इफ x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 10. देन यूजिंग आवर बेसिक फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 1/2 base is 5, height is 10, 2 5s are 10, 25 square unit. देखो सेम टू सेम 25 यहाँ भी आया. ओके इस तरह से आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग योर बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके बट हमें क्या यूज़ करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 ऑफ dx. क्यों, क्योंकि आपने रेंज लिया है x का, x फ्रॉम 0 to 5, तो dx लिखना पड़ता है. यहाँ उसका अपोजिट, तो x का अपोजिट y, मतलब y द फंक्शन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू 2x आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके आया समझ में. तो ये फर्स्ट हो गया. सेकंड भी हम लोग करते हैं, नोट कीजिए पहले, प्लीज मेक अ नोट. द सेकंड कर्व इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5. कितना 4. तो आप ग्राफ बना सकते हो ऐसे. दिस वन इज इक्वल टू x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका सेकंड आंसर है, x डैश और y डैश. ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन मीन्स अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट कर्व, दैट इज x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. x is equal to 0. x is equal to 0 means equation of y axis. The second curve is x is equal to 5. That is the equation of a line which is parallel to y axis at a distance of 5 unit to the right side of the y axis. देखो दो ही साइड है, ये y axis है, y axis के पैरेलल या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा. ओके सो x is equal to 5 is the equation of a line which is parallel to y axis at a distance of 5 unit to the right side of the y axis. पॉजिटिव रहेगा तो राइट, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट. ये 1 है, 2, 3, 4 एंड 5. 5 से 5 x is equal to 5. This one is x is equal to 5 parallel to y axis at a distance of 5 unit. 5 5 5 5 5 5. ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है. ओके 5 यूनिट. तो यहाँ पे कितना हुआ, 5 और 0. क्यों, क्योंकि ए पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज ए. पॉइंट ए कहाँ पे है, लाई ऑन द x एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट 0 होगा. सेकंड इज y इक्वल टू 0. वी नो दैट y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. y is equal to 0 is the equation of x axis, and y is equal to 4. y is equal to 4 is the equation of a line which is parallel to x axis at a distance of 4 unit to the above. Parallel to x axis at a distance of 4 unit. x axis के parallel हो और इसके 4 यूनिट पे हो, मतलब +4.
+4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 एंड 4, ऐसा यहाँ ऐसा पैरेलल हो, तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू 4। ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द एबव ऑफ x एक्सिस के ऊपर। तो इन सब का दैट इज y x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज 4 कर्व्स, ये रहा, ये तो रहा आपका कर्व। अब आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आप कैसे भी आप x का भी रेंज ले सकते हो, यू कैन टेक द लिमिट्स ऑफ x और यू आर फ्री to take the limits of x. If we move along positive x axis, we have to take the limits of x. अगर आप इसके along चलते हो तो आपको y का लिमिट लेना पड़ेगा। तो आप किसी का भी लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने क्या लिया, एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 5, और यहाँ पे क्या लिखना है, dx, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे, ठीक है। अपर लिमिट 5 और dx लिखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, y। दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 dx y इन द फॉर्म ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू 4। y यही तो कर्व, यही तो बनाया, ये रहा क्या, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 जो y एक्सिस के पैरेलल है और कितनी दूरी पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द राइट साइड। प्लस रहेगा तो राइट, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट, किसके, y एक्सिस के पॉजिटिव राइट और लेफ्ट। अब y है कितना, y है 4, ये आया 4 dx, दिस वन इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 ऑफ 1 dx and this one is equal to 4 integral of 1 with respect to x is x from 0 to 5, तो 4 आया और यहाँ पे 5 minus 0 that is 20, तो ये 20 आपका एरिया हो गया, 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो आफ्टर ऑन ड्राइंग द डायग्राम, ऑन ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व्स, ओके। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय y इज इक्वल टू sin x, साइनसॉइडल कर्व, एंड x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 5. You can find using our formula of area, that is x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Since you are writing the range of x, means limits of x, so we have to write dx here and y, okay. This is equal to integral from x is equal to 0 to pi by 2 y means sine of x dx, and this one is equal to integral of sine of x is minus cos of x taken from 0 to pi by 2. This one is equal to minus cos of x 0 to pi by 2. On substituting the upper limit, that is cos of pi by 2, minus on substituting the lower limit, that is cos of 0. This is equal to cos 90, cos pi by 2 means cos 90, that is 0, cos 0 is 1. So we get minus into minus plus, that is 1 square unit. तो इस तरीके से आप एरिया इनक्लोज्ड बाय एरिया फॉर्म बाय कर्व y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड x इज इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई बाई 2 फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ग्राफ के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो। दिस वन इज योर साइनसॉइडल कर्व, यहाँ पे 0 होता है, 0 पाई और यहाँ पे 2 पाई एट्सेट्रा, तो ये रहा आपका पाई बाई 2, ओके। दिस कर्व इज दिस कर्व 0 to पाई बाई 2, यहाँ 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो इस यहाँ ये आपका अपर लिमिट दैट इज 1,
आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकते हो, आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकते हो। तो रेंज क्या हुआ, रेंज है इसका 0 से लेकर के π/2 तक, टेकिंग फ्रॉम 0 to π/2। और ए एरिया किसने बनाया, x = 0 to π/2, मतलब ए वाला और ए वाला, x = 0, ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एंड दिस कर्व, और द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज साइन ऑफ x, और यहाँ पे आया dx। इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट, क्लियर, आया समझ में? तो ये रहा।